Hello. Okay. Welcome friends. Welcome to the course of induction engineering. In the continuation of our last topic, that is methods of forecasting. Today we are going to see second methods of forecasting, that is sales force estimation. Sales topic is forecasting. Forecasting में हम देखे थे पहला historical model और एक second causal model थर्ड हम अभी देखेंगे sales first revise historical model, also known as estimate based on past experience, also known as estimate based on past experience. Okay. In this topic, we had seen that our forecasting is based on the fact that what had done in the past is the basis for future forecasting. Okay, let's revise. In this model, suppose in the summer season, a fan company sells 1,000 of fan. Okay, if the company uses historical model as a basis, then we will set a target that in the same season, that is season of summer, the company will sell 1,500 or at least 1,000 fan. Okay. In this model, we are not considering the different parameters or different variables. Suppose today this is a corona period. Okay, so in corona period, all company sales get deteriorated. Okay, all company sales get deteriorated or get lower and lower. So we are not going to compare this summer to our last summer, or if we are comparing, then we should keep a different parameter in mind that in last year the things are good and in this year the things are worst. Okay. Suppose a beverage company, say for example Pepsi or Coke, sell 1,000 of bottle per day in a
city, maybe Gorakhpur, Lucknow, whatever. But in this summer season, okay, I am forget to mention that in the summer season, okay. Now, in this Corona period, the same company will, sorry, is selling approx 1,000 to 2,000 bottles per day. Okay, means next year they are not going to sell 1,000 or 2,000 and parameter because there is some foundation, some restriction due to Corona. Okay, means we are going to see our historical things as a basis for our forecasting. Okay. Second is causal model. Causal model is nothing but the relation between cause and their effect. What is the cause and what is the effect? In the historical model, we are not bothering about the different variables, different restrictions. But in the causal model, we are going to see different variables. Maybe suppose this year there is Corona period and the previous company able to sell 10,000, sorry, 1,000 to 2,000 bottles per day. But next year, the same company will able to sell 15,000 of bottles per day. So, if company using causal model, he may include the effect of different things that is going to disturb the sale of a company. Okay, that two things we are saying already. Okay, now we are going to see third model, that is sales executive model. In other terms, it is also known as sales force estimation. Sales force estimation. Okay, first understand it, then we are going to write each and every point related to sales executive model. Suppose each company has sales executive or sales force. Okay, and the sales force are suppose experienced sales force are self enough or that much experience or that much experience that he may predict what are the different factors that is going to affect. Okay, sales force or sales executive know better than the higher management or higher authorities. Means the sales force know the root level of the things, what are different factors or what are different restrictions that is going to affect the sales of a company or sales of a product. Okay, suppose initially last year there is X, Y, only two companies are there for a specific product. Okay, suppose there are two companies for this for a specific product X and Y. Okay, now a Z company of same product are introducing this year with
cheaper rate. Okay, so sales executive will estimate that there will be some restriction or some barrier for selling the things because jet is also there. Or maybe another factor, I am giving just an example of this. Maybe another factor will be going to disturb the sales of a product. Okay, means no man or not a management will know better than the sales executive that is moving in market from shop to different shop or from one city to another city. Okay, means we are going to use sales executive or sales person knowledge for forecasting the things. Okay, now write down line by line. Write down. This method assume that this method assume that the person in market know better. Okay, the person in the market know better about the future market trend. Know better about the future market trend. Okay, this method assumes that the person in the market know better about the future market trend. Means what is going to happen or what are the different factors that are going to affect the sales of a product. Means the person in this field knows the better the different barriers or different merit also. That not means for vaccine that not mean the different demerit only. That include the different merit only also because suppose in the next 2-3 months there will be launching of program machine. Okay, so there must be a good possibility for increasing sales in the next year rather than this year. Okay, so forecasting include merit as well as demerit also. Okay, so the sales executive is going to take the better things or the things that is uh, related or best related to the market. Okay, this forecasting is based on the information about or information given by salesmen. Okay, right. So this forecasting include the information given by salesmen given by salesmen. Okay, many companies have
sales officer or sales officer in different areas of the country. Areas of the country. Okay. Now, this salesman is going to give the different ideas related to sales. These sales executives are going to give you the ideas related to sales of our product. I come the same thing. These sales representative gives चमक रहा है some difference here. I am writing here gives. Okay. लिखा है यहाँ से. Gives their estimate about their estimate about their estimate about demand for product, across various area of country. Okay. Suppose a representative from Tamil Nadu gives some ideas, and a representative from UP or Bihar gives some idea. It is not necessary that both the sales executive gives the same idea or same thought about the product. Okay. In South India or specifically say in Tamil Nadu, there is more consumption of rice as compared to UP or Bihar. In UP and Bihar, there is equally consumption of rice as well as wheat. But in Tamil Nadu, there is consumption of rice is more as compared to our wheat. Okay, so sales executive of food industry will give different ideas from different area of country. Suppose in the coastal line state of India consume more and more non-veg as compared to landlocked state of India. Okay, state like West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra consume more and more non-veg because they have
lots of or they have sufficient amount of reservoir for non-veg. Okay, but the landlocked state consume less as compared to our coastal line state. Okay. Now, next one. Now, the estimate given by the sales executive is studied by regional manager or regional sales manager, and different regional managers send their report to the company. Okay, right now this idea ideas given by sales executive executive will study studied by regional sales officer and report sent to company by sales or by sales manager. Okay. Then, according to the report, the company is going to supply their product. Okay. Okay. This product is or this report is studied by company, and then the company will supply the demand, supply the product according to the demand given by our sales executive or sales manager. Okay, right now. Right now. These reports are analyzed and the total demand for product is estimated. These reports analyzed and total demand for products total demand for product is estimated.
these estimates are fairly accurate, and these estimate and these estimate is clearly, or you will say approximately accurate. Okay, now this is all about forecasting on the basis of sales force or sales force executive. Okay, now second type of forecasting, sorry, fourth, that is market research or market survey. दो और बचा है इसको मेंशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बराबर। नेक्स्ट वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू सी ओनली theoretical part of forecasting. Okay, theoretical forecasting method like market survey or market research. Market research. Yes. Now, as clear from name that we are going to see or going to do market surveys for initial launching of any product. For initial launching of any product, it is important for a company that he must do market survey for the product. Okay, it is not necessary that market survey of the product that is going to produce, or it is not possible also, but we have to survey different products that are existing in the market. जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके सर्वेस करना जरूरी है। You may knowingly or unknowingly be part of the market survey, maybe on Facebook, maybe on Twitter, maybe on Instagram, maybe on WhatsApp, maybe on any other platform. You may be part of market survey. Suppose jingle firms and ask a question, which is your favorite toothpaste? Different options there, Pepsodent, Colgate, Patanjali and other में आपको सुविधा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक चार ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें टिक करना होगा, कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो उससे जो कंपनी होगी, मे बी वो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी जो तीनों ऑप्शन में है वो सर्वे करा रही हो, या जो कंपनी है जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है वो सर्वे करा रही हो। ठीक है, तो वो उससे पता करेगी में भी अगर कोलगेट जीत जाता है सर्विस में। ठीक है, तो कोलगेट के प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर एनालाइजिंग they may get or come to a conclusion that due to this product or due to this specification, Colgate is or Colgate demand is increasing or on the top of others companies. Okay, suppose take example of the Chinese mobile company. Is Redmi or Vivo or Realme, different Oppo, ठीक है, तो हमारे पास इतने ढेर सारे चाइनीज कंपनीज हैं। ठीक है, तो वो अभी इतने बूम पे क्यों हैं रेदर देन इंडियन और अदर
मोबाइल कंपनीज के, ठीक है। इसका रीजन डिफरेंट कंपनीज चेक करती हैं। रीजन कुछ आप लोग भी जानते हो, क्योंकि कम प्राइस में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। इस यू आर गेटिंग more and more specification on less price as compared to other companies, say for example Samsung, Moto, Lavas, ठीक है, जो इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन और इसके दूसरे की स्पेसिफिकेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चाइनीज कंपनी है वो कम प्राइस में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन या ज़्यादा फीचर आपको प्रोवाइड करा रही है। ओके, बट राइट नाउ जो भी हम समझे हैं उसको दो लाइन लिखते हैं। Right now, it is always very difficult to find the demand for new product. It is always very difficult to find the demand for new product. Okay? Historical or past data regarding the rules will not available. Okay? Historical or past data regarding the rule will not available. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर आप नई कंपनी खोले तो आपके पास कोई पास्ट डाटा भी नहीं होंगे, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल डाटा भी नहीं होंगे। Okay? So we have to adopt a newer techniques known as market research or market survey, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे। In this, sales representative introduce the new product in a small area. In this, the sales representative introduce the new product in a small area. Introduce new product in a small area. Okay? छोटे एरियाज में like village or some sort of hello. Okay, sorry. ठीक है, स्मॉल एरिया में पहले उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मे बी इन अ सिटी, स्मॉल सिटीज, मे बी इन विलेज, मे बी सम क्लस्टर एरियाज, ठीक है, जहाँ पे डिमांडिंग या जहाँ पे ब्रांडेड थिंग्स नहीं खरीदे जाते हैं। जनरली एक जनरल वे में तो ऐसा हो गया है। आई विल डिस्कस द निरमा वॉशिंग पाउडर और पाउडर, उसके बारे में बताऊंगा पानी, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कैसे चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। It is issued free if the product is consumable type. It is issued free in a certain area. ठीक है, if the product is consumable type, it is issued in that area. Okay, मीन्स पहले आप इसकी लत लगाएंगे, जैसे जियो ने किया था वो विशेष तरह के यानी पहले अपने प्रोडक्ट को फ्री में
यूज करेंगे लोगों के बीच में, अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है देन आफ्टर यू आर गोइंग टू get some price or some initial price so that your product is going to stable in a market. ठीक है, शुरुआत में आप ज़्यादा हायर प्राइस रख देंगे तो मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ इनिशियल प्राइस हम लोग रखते हैं। ठीक है, अगर वो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ठीक है। The new consumer durable product like grinders, washing machine, etc. are demonstrated in limited place. ठीक है, the new product like grinder, washing machine, etc. लिमिटेड प्लेस में इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग। लाइक महिंद्रा ट्रैक्टर्स। ठीक है, अगर अच्छा एक पॉइंट छोड़ के याद रखते हैं, इक्विपमेंट लाइक ग्राइंडर, washing machine, are demonstrated in limited area. Okay, suppose you are going to sell a tractor that is Mahindra. Okay, then Mahindra tractors or Mahindra company is going to show some features or some special feature and what specification of Mahindras in different areas. आप लोग भी देखो कई जगह ऐसे किया जाता है। ठीक है, मे भी आप लोग अपने कॉलेज में देखे होंगे कि जब टेक फेस्ट होता है तो डिफरेंट बाइक्स वगैरह वाले आते हैं, कैटेगरी लगाते हैं, कैटेगरी में लगा जाते हैं तो वो आपको उसके बारे में फीचर बताते हैं, क्यों ये अच्छा है, क्यों दूसरे खराब हैं, क्या स्पेशल स्पेसिफिकेशन में प्राइस ज़्यादा है, इसके लिए प्राइस ज़्यादा है। ये सब आप लोग देखते हैं जब भी होता है, यानी हमको डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ता है लिमिटेड एरिया में। ठीक है, चलिए लिमिटेड एरिया क्यों, क्योंकि आप ऐसे भीड़ वाला एरिया में या पब्लिक प्लेस में डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, स्पेशल सेटअप चाहिए। ठीक, नेक्स्ट then the demand of the product in that area is found out. Okay, after that demand of the product in that area is find out. जैसे जो भी लोग देखने आएंगे आपके इक्विपमेंट को, उनको एक फॉर्म देंगे या अगर वो पढ़े लिखे लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या स्पेशल स्पेसिफिकेशन है क्या नहीं है, वो सब उसमें टिक करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके वो आंसर देंगे। ठीक है, मे भी आप लोग भी कभी ना कभी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट पे होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं, उसके बाद फिर आपके डिफरेंट क्वेश्चन के जो आंसर होंगे एक उसको पता किया जाएगा क्या डिमांड है, फिर उसके अकॉर्डिंग से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। ओके, ओके, लास्ट में
market reaction is then measured and the total demand is the projected from this result. Market demand is then find out and then total demand is projected from this and then total demand for that product is projected in that area. Okay. So this is also a type of forecasting market survey. ऑनलाइन भी मार्केट सर्वे होते हैं, हम जानते हैं. We are the parts of the different surveys, maybe live or maybe online. हाँ, निर्मा चैलेंज की बात करें, निर्मा चैलेंज निर्मा के प्रमोशन की बात कर रहे थे. इनिशियली निर्मा, ठीक है, शुरुआत में निर्मा को भी आता था. सॉरी, निर्मा फेना का अभी आ रहा होगा. तो फेना के जो सेल्स एक्टिविटी पहला जो मैनेजमेंट वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, ठीक है, उसमें इनको इंट्रोड्यूस किया. जो छोटे कस्बे थे वहाँ पहले कम रेट पे ज़्यादा वजन एंड ज़्यादा वेट, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया. हर गांव में इसको पहले फेमस किया गया और वंस इसको जब फेमस हो गया तो ये फिर शहरों की तरफ हुआ, गांव से फिर शहरों की तरफ होगा. आप देख रहे हैं इसका टीवी भी आ रहा है, ठीक है, फेना के बारे में, ठीक है, फेना चैलेंज भी आ रहा है जो न्यूज़ निकल जा रहा है, फेना चैलेंज, ठीक है. तो ये भी एक तरह से मार्केटिंग थिंग्स है, मार्केटिंग सर्विस है, ठीक है. तो हम लोग ऐसे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. जियो की बात करते हैं, जियो में क्या किया है, इनिशियली जियो इंट्रोड्यूस फ्री नेट फॉर देयर कस्टमर. अपने कस्टमर के लिए फ्री नेट देना शुरू किया, ठीक है. अब एक बार लत लग गई सबको, ठीक है, लत लग गई तो फिर प्राइस भी बढ़ना शुरू करें. एंड जब नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो गए, जियो में सिंपली क्या है, ठीक है, फ्री में सबको फ्री बीज जिसको कहते हैं, फ्री बीज, ठीक है, तो फ्री का सबको आदत लग गया है. तो उन्होंने क्या किया कि उसको अब प्राइम मेंबर बनाना शुरू कर दिया. प्राइम मेंबर के लिए 99 रुपये मुझे याद नहीं है, 99 रुपये करके, ठीक है. वो लोग सोचे कि हाँ ठीक है, 99 रुपये में कोई फर्क नहीं है, 99 रुपये में शुरू किए. देन आफ्टर जियो get some money or get some recharge money from the customer. कस्टमर से पैसे में शुरू कर दिए रिचार्ज करने के. और फिर आप देख रहे हैं जो भी अदर डिफरेंट कंपनीज हैं, उन्हीं के बराबर इनके भी सेल्स एंड उनकी बराबर इनके प्राइस है, ठीक है. बट जियो company booms the SIM industry or telecommunication industry. Okay, एक बूम तरह से लेके आ गया. कैसे, पहले जो हमारे डाटा कॉस्ट है वो हायर थे, बहुत ज़्यादा हायर होता है. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो the price get deteriorated and
now as compared to previous before Jio data prices reduces, ठीक है, बहुत कम हो गए और अभी तो देखेंगे सब कंपनी के लगभग वही है, फिर भी ये नॉर्मल इंडियंस के लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिफरेंट more forecasting method. Okay, that's all for now.